So now I am going to explain stress versus strain curve for a thin wire. Stress versus strain curve for a thin wire. Now see here, within the limit of elasticity, what is the stress? Stress is defined as the restoring force per unit area of area. Stress is defined as restoring force per unit area, and within limit of elasticity, RF is equal to DF. What is DF? डिफॉर्मिंग फोर्स. RF की वैल्यू किसके इक्वल होती है? डिफॉर्मिंग फोर्स के इक्वल होती है. मतलब हम RF कैसे बढ़ा सकते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स बढ़ाती जाए. RF कैसे बढ़ा सकते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स बढ़ाती जाए. हियर दिस इज ए वायर विच इज ऑफ लेंथ L एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A. Area of cross section is A, and a mass M has been suspended. Now we will keep on increasing the value of mass M. जैसे जैसे M की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे, the weight which is acting on the wire, weight which is acting on the cross section A, that will keep on increasing. मतलब क्या होगा? M की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, deforming force on the cross section A will increase, and when deforming force will increase, what will happen? The restoring force that will also increase. Restoring force RF will also increase. कहाँ पर चाक है? चलो ठीक है. Now here restoring force will also increase. So see here, this restoring force will because this value of M is increasing, therefore deforming force Mg is increasing, and deforming force Mg is increasing, therefore restoring force will also increase. It is clear? Now when deforming force is increasing, then the value of L will also increase. Value of L will also increase. मतलब क्या है? अगर हम Mg की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, L की भी वैल्यू बढ़ती जाएगी. L की वैल्यू बढ़ने से क्या हो जाएगा? स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन इज स्मॉल l अपॉन कैपिटल L. अब ये कैपिटल L तो चेंज नहीं होना. व्हेन यू विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ M मीन्स द वैल्यू ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, स्मॉल l इज इंक्रीजिंग, देयरफॉर स्ट्रेन विल आल्सो इंक्रीज, and there will be a direct proportionality between stress and strain. There will be a direct proportionality between stress and strain, means stress upon strain. Stress upon strain, it will be constant. And when it will be constant, then what will be? When it will be constant, then the graph of stress versus strain will be a straight line. जब क्या है? A और B के बीच का रेशियो कांस्टेंट है, तो A वर्सेज B का ग्राफ या B वर्सेज A का ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन. सो हियर ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन. सो यू कैन सी हियर दैट अप टू द पॉइंट A दिस ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन. अप टू द पॉइंट A ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन. इट्स स्लोप स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. स्लोप क्या होती है? स्लोप इज डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, दैट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. व्हेन देयर इज द चेंज इन स्ट्रेस इज दिस, change in strain is this. You can see here, when there is the change in stress is PQ, change in strain is this. This is the change in strain, and this ratio will be the Young's modulus. This ratio will be the Young's modulus. So up to the point A, proportionality holds. Proportionality is holding means there will be a constant ratio between stress and strain. Stress versus अपॉन स्ट्रेन कहीं भी निकालें, हम यहाँ पर निकालें या यहाँ पर 2 पॉइंट लेकर निकालें, एट एवरी पॉइंट इट विल रिमेन सेम अप टू द पॉइंट ए. सो अप टू द पॉइंट ए प्रोपोर्शनलिटी इज होल्डिंग एज वेल एज इलास्टिसिटी इज आल्सो होल्डिंग. इलास्टिसिटी इज आल्सो होल्डिंग. इलास्टिसिटी इज आल्सो होल्डिंग मीन्स if you unload the wire up to the point A, if you unload the wire up to the point A, what will happen? It will regain to its original length. ये अपनी ओरिजिनल लेंथ को रिगेन कर लेगा. इट्स क्लियर? मीन्स इलास्टिसिटी इज होल्डिंग.
Now after point A, you will find that now strain is changing more rapidly as compared to earlier. After point A and up to the point B, A के बाद and up to the B, strain is changing more rapidly than stress than earlier. You can see here, हमने यहाँ पर दो सेगमेंट्स लिए हैं, पी क्यू और आर एस. जितना पी क्यू चेंज इन स्ट्रेस है उतना ही क्या है, चेंज इन स्ट्रेस आर एस है. दोनों जगह चेंज इन स्ट्रेस क्या है, इक्वल है. बट इफ यू सी द चेंज इन स्ट्रेन, हियर चेंज इन स्ट्रेन इज लेस एंड हियर चेंज इन स्ट्रेन इज मोर. हियर चेंज इन स्ट्रेन इज लेस एंड हियर चेंज इन स्ट्रेन इज मोर. Means for the same change in the stress, for the same change in stress, now there is the greater change in strain. Means strain changes more rapidly than stress after point A. And if you unload the wire at the point B, proportionality is not holding because now this part has become curved. Part has become curved. And when part has become curved, then this will not be a constant. It will be a variable values. इसकी वैल्यूज क्या होंगी, वेरिएबल होंगी. मतलब हम ए से बी के बीच में कहीं भी स्ट्रेस अपान स्ट्रेन निकाले सेम वैल्यू नहीं आएगी. यहाँ पर कुछ अलग आएगी, यहाँ पर कुछ अलग आएगी. ए से बी के बीच में दो पॉइंट्स लें एंड हम स्ट्रेस अपान स्ट्रेन फाइंड आउट करें. व्हाट विल हैपन, वैल्यू ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन विल नॉट रिमेन सेम. जबकि ओ ए पार्ट में क्या रहेगी, सेम रहेगी. ओ ए पार्ट में वेदर यू फाइंड हियर और यू फाइंड हियर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, दैट विल रिमेन सेम. सो आफ्टर पॉइंट ए, proportionality is not holding but elasticity is still holding. Means if you unload the wire corresponding to this stress, if you unload the wire corresponding to this stress, means if you remove these weights, it will regain its original length. ये अपनी ओरिजिनल लेंथ को ऑक्यूपाई कर लेगी. मीन्स B is the elastic limit. Now after point B, what will you find? After point B, we will see that now strain is changing much more rapidly than earlier. मतलब क्या है, much more rapidly than earlier. हम क्या है, दो पॉइंट्स ले लें. यहाँ पर हमने दो पॉइंट्स ले लिए. यू कैन सी हियर, जितना ये है उतना ही क्या है ये, या उससे थोड़ा सा कम ही है. बट व्हाट इज द चेंज इन स्ट्रेन, चेंज इन स्ट्रेन इज हाउ मच, चेंज इन स्ट्रेन क्या है, बहुत ही अधिक है. चेंज इन स्ट्रेन इज, इट इज फॉर द सेम चेंज इन स्ट्रेस, change in strain is very much. Means it is much more than earlier values of strain, much more than earlier values of strain. So after point B, we will find that strain is changing much more rapidly than earlier. But at a point C, here there is a point C, there is a point C. If you unload the wire at the point C, what will you find? When you will unload the wire at the point C, it will not return to its original length. It will not return to its original length. Its length will be permanently elongated. Means now it will not remain elastic. It will lose its elasticity. You can see here, this I am. If you unload the wire after point B at the point C, at the point C, here this is the point B, this one is point, and this is point C. If it is unloaded at the point C, means stress corresponding to the point C. If the wire is unloaded corresponding to this stress which is corresponding to C, we will find that it will be permanently elongated. Means a permanent strain will be produced. Permanent strain will be
produced. And what will be that strain? You can see here. Now, on unloading the wire at the point C, मतलब M को हटा देने पर, M हटा देंगे क्या हो जाएगा? स्ट्रेस तो खत्म हो जाएगा. क्यों? क्योंकि डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं तो रिस्टोरिंग फोर्स भी नहीं. बट स्ट्रेन इज स्टिल प्रेजेंट. Strain is still present. It's clear. There will be a permanent strain corresponding to OO dash. Means you can see here that up to the point A, elastic limit as well as proportionality limit both are existing. Up to the point A, wire क्या है? Elastic भी है और proportionality between stress and strain is also existing. But after point A, what will happen? There will be no constant proportionality between stress and strain. There is no constant proportionality between stress and strain. But elasticity is still holding up to the point B. Means if you unload the wire corresponding to this value of stress, corresponding to this value of stress which is corresponding to B, what will happen? Wire will occupy to its original length capital L. Means there will be no strainage left. But after point B, what will happen? If you unload the wire at the point C, there will be a permanent strain OO dash. मतलब ये ऐसे CBAO के थ्रू नहीं रिटर्न होगा. It will return directly and there will be a permanent strain at OO dash. It's clear. Now, if you increase the stress after the point C, if you increase the stress after the point C, a maximum value of stress is achieved, after which what will happen? At which wire will start, means after that it will break. After that it will break. That is called the breaking stress. Means the maximum stress up to which the wire wire will not break, that will be equal to D. Stress corresponding to the D. Means the maximum stress up to which the wire will not break, that is up to the D. D की वैल्यू पर D के करस्पॉन्डिंग जितना स्ट्रेस है, D के करस्पॉन्डिंग जितना स्ट्रेस है, जब स्ट्रेस उतना हो जाएगा, व्हाट विल हैपन? वायर विल ब्रेक. इट इज क्लियर. एंड इफ वी व्हेन दिस वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इज रीच्ड, जब ये वैल्यू स्ट्रेस की पहुंच जाएगी, तो अगर हम वायर को क्या कर दें? अनलोड भी कर दें. वायर को क्या कर दें? अनलोड भी कर दें. व्हाट विल हैपन? It will break because of its own weight. It will break because of its own weight. मतलब क्या है? जब ये वैल्यू ऑफ स्ट्रेस पहुंच गई है, ये वैल्यू ऑफ स्ट्रेस कैसे पहुंचेगी? When you increase the value of M. If you unload the wire at the point D, मतलब हमने इसको हटा दिया, इसको हटा देंगे, what will happen? Strain will not stop. Strain will keep on increasing. स्ट्रेन बढ़ता जाएगा बिकॉज ऑफ द ओन वेट ऑफ द वायर, एंड एट ए सर्टेन वैल्यू ऑफ स्ट्रेस वायर विल ब्रेक. दैट इज कॉल्ड द फ्रैक्चर पॉइंट. दैट इज कॉल्ड द फ्रैक्चर पॉइंट. सो यू कैन सी हियर अप टू द पॉइंट ए इलास्टिक एज वेल एज proportionality limit both exist, but after a proportionality loses but elasticity still exists. After B at the point C, what will happen? It will lose the elasticity also. It will be permanently elongated. So this region is called the plastic region. This is called the plastic region. जो डक्टाइल वायर्स होते हैं उनमें प्लास्टिक रीजन क्या होता है? बहुत ही अधिक होता है. डक्टाइल वायर विच कैन बी बीटन टू थिन शीट्स. Malleable क्या होते हैं? Which can be beaten to thin sheets. Ductile means which can be drawn into thin wires. For example, copper. They are having a very long region of this plastic region, and elastic region is up to this O to C. It's clear. So this is all about the stress versus strain curve for the thin wire.